Okay, guys. Hi, everyone. This is our guest today, Gazelle. She is the founder and the CEO at Gazelle and Associates, and she is providing the legal services for all the startups and the corporates. And she is doing very amazing job as of now. And we are very hopeful that she will keep on doing providing the great services to the startups and the corporates. If you check on her LinkedIn, she's full of knowledge and sharing with the startups and the corporate, which is very useful for everyone. And she is a university gold medalist, which is not an easy thing. And now she is doing the masters. Thank you so much for the wonderful introduction. I might think there's some miscommunication. I have completed my master's in corporate law as well, years back. Okay. And now I'm providing my services across India. See, earlier before COVID, we used to hesitate how to deal with the other states, other cities lawyer. But now with the time, we are providing services across India, and even we have started dealing with the international clients as well. And we are not specific industry domain, but yeah, we have expertise in IT sector, or we talk about e-commerce or edtech companies and many more. So Okay. yeah. Okay, that's really great to know. And about the audience, you must be aware that the audience are the young entrepreneurs, the interns who are about to start their new journey in the startup era. And this is something very important. I would say a session. Reason being, most of the startups once they start, they are from that technical domain. They know about the Yeah. things what they have to do, but they just avoid this like a non-core area according to them. But it is very useful when they are dealing with any like vendor agreements and all about the NDA contracts with the employees. And this will be a very helpful sessions for everything. So let's start with this. I think there is one message from Usha. Am I not audible? Yeah, She you're audible. You're audible. Okay. Okay. I think Usha, you can rejoin it if you are not able to hear. Okay. So let's start with this. First of all, we want to know that how like you provide all the services to the startups and corporates, how useful it is. Means like why it's so important. See, first of all, if we talk about all the entrepreneurs, everyone just focus on the business in the initial period, because I understand that they don't have time for such all kind of compliances, right? So basically, first thing, I'll list out the services that we provide. They are, one of them is legal advisory, like time to time that the entrepreneurs or all of them want legal advisory, so we provide legal advisory, we provide legal documentations, we draft hundreds of agreements for the business, we help in the IPR registration like trademark, copyright, patent, and we help in the debt recovery, we help in the committee formation, and we spread legal awareness. Mhm. So how this is important, I'll connect with your question is, see, non-compliance can be very penaltyful and harmful for the business, even in the short term and long term. जैसे हम सोचते हैं कि आज हम सिर्फ बिजनेस करते हैं, पर कल से जब हमें लीगल कोई लिटिगेशन के लिए या लीगल नोटिस आ जाता है या कोई पेनल्टी हम पे इम्पोज हो जाती है, उस वक्त चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई वी फोकस कि हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तभी से हम एक प्रॉपर प्रोसेस रखें। प्रॉपर प्रोसेस आई गेस इन द सेम कि हम प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स रखें, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग उसी हिसाब से दें कि उन्हें बिजनेस करना कैसे है। सबको पहले से ही पता होगा, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू इम्प्लीमेंट दैट लॉज। Right. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक होता ये है कि इन द स्टार्टअप्स लाइक कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वेयर वी स्टार्ट डूइंग द वर्क्स एंड समटाइम्स द आइडिया इज नॉट प्रोटेक्टेड, राइट? So how we have to ensure that like we have some idea, we have started working on it, and बाद में पता चले कि यार ये आइडिया प्रोटेक्टेड नहीं है, someone has already built up, और वो your all hard work, all ideas, all like expenses you have done on the team, तो वो नॉर्मली होता है वेस्ट। लाइक यू हाँ, मस्ट बी अवेयर कि ऐसे केसेस बहुत आते होंगे। बहुत बहुत। सो सबसे इजीएस्ट वे जो होता है और वो सबको पता है, इज एनडीए।
इंडिया। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। सबको पता है, बट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं। चाहे हम स्टार्टिंग में हमारे साथ कौन होते हैं, हमारे को फाउंडर्स होते हैं, उनसे साइन करवाएं, हमारे एम्प्लॉयज से साइन करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, राइट? तो गेट योर एनडीए साइन। ट्रस्ट मी, इट विल बी हेल्पफुल, इट इज बेनिफिशियल। प्रॉपरली एनडीए ड्राफ्टेड हो आपका, उसमें प्रॉपर डिटेलिंग हो, इट विल बी हेल्पफुल, और उसे प्रॉपर नोटराइज और स्टैम्प करवाएं। Second thing you can do is IPR registration, is intellectual property rights. Like आपका ट्रेड नेम है, उसका लोगो का, आपके पेटेंट का, आपके सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट, ये सब चीजें इन प्लेस होंगी। इन सब का रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो गेट योर ऑल दिस थिंग्स रजिस्टर्ड। एंड फिर हमें बहुत ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन होता है, और कोई इतनी अपने आइडियाज को चोरी नहीं होते। और अगर फिर इसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो जो स्पेसिफिक पार्टी है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इन्वेस्टर को बता रहे हैं, तो उनके साथ एक प्रॉपर डिटेल्ड अग्रीमेंट साइन करिए, और एम्प्लॉय को बता रहे हैं तो उनसे प्रॉपर अग्रीमेंट साइन करिए। सो दिस इज द वे यू कैन प्रोटेक्ट योर आइडिया। एंड प्रोडक्ट में या आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आइडिया होता है। Right. Idea hai, then only you can execute it. If idea is not there, एक्चुअली। you can execute it. And second thing is ki recently, I think a month back, there was an incident which happened with one of my friend. He started some organization. He was doing some work. He has some contract from a other company, like in from a different state. So, ओके। जो उनका NDA sign हुआ, in that NDA, that was signed over the email, right? राइट It was राइट not राइट। notarized. So ओके। when the issue happened, like government said or means the law say कि ये notarized होना चाहिए था. Is it true? Like everything should be notarized? नो 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 नो, Okay, इट इज नोटराइज इज जस्ट टू प्रूव कि दो जो पार्टीज हैं उन्होंने साइन किया है, टू okay, प्रूव दैट ऑथेंटिसिटी। सी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा लॉ है, वो कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी है तो भी वो वैलिड है लॉज में। तो okay, ये तो रिटर्न है। सी, ओरल है उससे ज्यादा प्रोटेक्टेड है रिटर्न, रिटर्न से ज्यादा प्रोटेक्टेड है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, मतलब लाइक स्टैम्प पेपर और नोटराइजेशन। सो ये स्टेजेस हैं जिससे आप ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर कोई ईमेल पे भी एक्नॉलेजमेंट ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल बी ग्लैड टू नो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लीगल नोटिस भी आप ईमेल के थ्रू या इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्व कर रहे हो, तो दे हैव कंसिडर्ड देम वैलिड। सो okay. This देयर is a इज नो very प्रॉब्लम। big step actually. Yeah, actually, need of that current time actually. So means like it's not mandatory कि notarized हो. You can have on email as well the contracts. Yeah, but to prove its more authenticity and to make it more strong, it is always advisable to have it on the proper stamp and proper notarization. Okay. That's a useful information for me. I was not aware of it. Even I was thinking that notarized is the one which is like valid. So normally what we do is we were following only the notarized format just to ensure with our vendors that let's do on the stamp paper as well. But yes, it's a very lengthy process and the projects get delayed sometime due to this Yeah, yeah, yeah. formality. Yeah. Okay. So another question is when we are doing any vendor agreements with the different software companies or with any other companies, what are the Correct. things like we have to take care of it so that we can be at a very safe side? Okay. See, with vendors, I'll tweak it in the perfect way. It's like you are an IT company, for example, and you provide services to the clients, right? Mhm. So there you should enter a proper master service agreement, MSA जिसे हम कहते हैं. In that particular, you should keep कि हमारे यहाँ see, it is a very exhaustive agreement. It should have more than 20 clauses, including business clauses and legal as well. Okay. So you have to state terms, मतलब when it will start, effective date, when it will terminate, और किन किन कारणों से terminate हुआ, और अगर terminate हुआ तो क्या remedies होंगी दोनों parties को, Mhm. right? अगर कोई dispute होता है तो they should have a proper governing law and the jurisdiction, मतलब कहाँ का law लगेगा और क्या jurisdiction क्या है उसका. Mhm. Next thing, you should have proper payment terms, pricing, services you are mentioning, you are providing, and
rather than this you should focus on non solicitation clause. Non solicitation is like जो आपके एम्प्लॉयज हैं या क्लाइंट्स हैं उनको वो पार्टीज एक दूसरी पार्टी सॉलिसिट नहीं कर सकती है, मतलब लाइक कि आप वो कंपनी छोड़कर हमारे साथ काम करो, राइट? Mm-hmm. ऐसी चीजें। Mm-hmm. दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, यू शुड मेंशन ऑल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यू विल बी शेयरिंग विद द पार्टीज, कि ये चीजें हैं कॉन्फिडेंशियल और आप इस दूसरी पार्टी की किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव नॉन कॉम्पीट, लाइक आप हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब हम जब तक अग्रीमेंट में हैं या हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके बाद भी कुछ ईयर्स तक आप साइन मतलब वो नहीं कर सकते हो, कॉम्पिटिटर्स के साथ वर्क नहीं कर सकते हो। So Okay. these are the important points you should keep into the mind while entering into the service agreements. So yeah, that is a very huge amount of list actually. Yeah, it And is. yeah, and normally I would say that 70% of the startups won't be following it, and at the end of the day, they used to take the help of yours uh, when they are stuck in a bad situations. Right. Yeah, so it's better recommended for everyone. Like when they are starting their journey, it's good to have a legal consultant initially level so that like you can guide them up for a future trouble, which happens with like initially with most of the companies. It's not just like we don't want to learn. It's the process. You can't do everything, right? You need to Exactly. have like this thing with you, Outsource it to right? someone. Right. Yeah. So in the meanwhile, like the people can like drop their questions as well, so that like we can keep on picking the questions after that. Okay. So that was about the agreement, and what's about like we have a when we talk about the NDA, it's like it's the agreement is like different for the employers, employees, and when the NDAs talk about the software projects, then again it's a different format. So Yeah. how many different formats like we should take care of it while creating an organization and like for the employees and all. See, for business, hundreds of agreements can be drafted. Yes. But if we talk about, like, I guess most of the audience might be from IT sector, right? Right, right, right. So can I take the example of IT companies? Sure, sure. That would be Yeah. perfect. So IT companies में मैं अगर start करूँ, then first thing, important agreements. I'll list 5 to 10 agreements which are most essential. You can have as many as you want it as per the need basis, right? First is with employees, right? Hmm. With employees, you need to have proper offer letter, proper employment agreement. Employment agreement is again a very exhaustive agreement. It covers everything related to the relation between the employer एन एम्प्लॉय, जितने भी लेबर लॉ के कंप्लायंसेस हैं जित होने चाहिए वो सारी चीजें, यही नॉन सॉलिसिटेशन जो अभी मैंने बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन कॉम्पिटिटर, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है कि एम्प्लॉयज आज इस कंपनी में हैं, कल आपके ही कॉम्पिटिटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस, आपकी ही जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करें। तो पहली चीज, एम्प्लॉयज के साथ ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, एंड एज पर लॉ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ प्रॉपर पॉश पॉलिसी, राइट? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो वो एम्प्लॉयज के साथ ये 3 चीजें हैं। उसके साथ में हम अगर हम देखें हमारे वेंडर्स के साथ जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं, तो वेंडर्स अग्रीमेंट, अगर हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं to our clients, so we need to have a proper MSA, is master service agreement, along with What that is service level MSA? agreement. What? MSA, Yeah. MSA is master service agreement, जो अभी हमने डिस्कस पूरा किया था, जो हम Okay. अग्रीमेंट क्लाइंट के साथ Service करेंगे। agreement. Right. Okay. Okay. सर्विस लेवल अग्रीमेंट, तो ये 2 चीजें क्लाइंट्स के साथ होना जरूरी है, जिसमें पेमेंट, प्राइसिंग, अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो क्या राइट्स हैं, ये सारी चीजें काफी क्लियर होंगी। ठीक है। उसके बाद में हम बहुत सारी थर्ड पार्टीज होंगी, जैसे कि हमारे फ्रीलांसर्स होंगे, इंटर्न्स होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, एडवाइजर्स होंगे, तो इन सब के साथ में अग्रीमेंट, राइट? तो इट लुक्स कि बहुत सारे अग्रीमेंट हैं, बहुत टिपिकल प्रोसेस होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ वन टाइम कॉस्ट एंड वन टाइम प्रोसेस। एक बार वो प्रोसेस बन जाती है ना, इट्स वेरी स्मूथ एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, अपने आप वो चीजें चलती रहती है कि सेल्स पर्सन को पता है कि जब भी नए क्लाइंट के साथ आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू साइन दैट पर्टिकुलर एमएसए। एंड जनरली एक कंपनी में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेट सेम होता है, बस बेसिक चीजें हैं जो पर्टिकुलर क्लाइंट्स के साथ चेंज होती है, तो यू कैन चेंज इट इजिली। or after that you can have your IPR registrations done,
ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, हमें ये लगता है कि अरे करवा लेंगे, नाम में क्या है, बट एवरीथिंग इज योर, सी गुडविल इज योर एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। बाद में जब हमें फिर लिटिगेशंस फेस करने होंगे उस पर्टिकुलर नेम के लिए, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, और इनिशियली इट्स वेरी इजी टू गेट योर आईपीआर रजिस्टर्ड। साथ ही साथ यू शुड हैव प्रॉपर कमिटीज जो भी लगती हैं हमें, जैसे कि पॉश कमिटी, सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमिटीज हैं, ये प्रॉपर कमिटीज होनी चाहिए। तो दिस आर द फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, Yeah. और वेदर इट ऑफ मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, कुछ भी हो, Right. ऐसा। In the master service agreement, which you said very correctly, कि जिसमें हम payments वगैरह का भी clauses वगैरह होते हैं. It happened with one of our like my known startup friend. या, Like they started some project और उसमें उन्होंने अपने payments term client से नहीं लिखे हुए थे कि आप मुझे ये payment नहीं दोगे तो ये होगा. At the end of the day, he delivered something around 5 lakhs project. He delivered it और उनकी कुछ 2.50 lakhs की payment फंस गई थी, and because he didn't have anything ऑन ड्राफ्ट, क्लाइंट भी चला गया एंड ही हैज नथिंग इन द लीगल पॉइंट कि वो उस चीज को जीत सकता था. ट्रू ट्रू। या. सो इसीलिए अग्रीमेंट्स की इम्पोर्टेंस हमें जब ऐसा कुछ होता है ना तब पता चलती है, और इतनी कॉस्ट ज्यादा लग जाती है जितनी इन अग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग में नहीं लगती है। सो दैट्स वाई, और सी अ लॉट ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनिशिएटेड, लाइक एमएसएमई उद्योग आधार सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको पेमेंट की टर्म्स ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आप किसी के साथ भी कर रहे हो तो यू हैव टू गेट इट पेड विद इन 45 days। तो ऐसी ओके. बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एमएस, अगर हम उद्योग आधार सर्टिफिकेट रखते हैं तो हमें उससे बेनिफिट होते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अगेन अ वेरी विजडम नॉलेज फॉर एवरीवन. या, एंड सी, लोगों को पता नहीं है कि उनका राइट है ये, और लोग अपने राइट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। लिटिगेशन और वो सब तो बहुत दूर की बात है कि हम जाएंगे कोर्ट में, लीगल नोटिस सर्व करेंगे, फाइल करेंगे। नहीं, बहुत सारे राइट्स हैं हमें जो पहले से ही मिल रहे हैं, जो हम अवेल नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग द लीगल अवेयरनेस। ओके. एक क्वेश्चन मॉर्निंग में इंटर्न्स का था कि लाइक दे वांटेड टू आस्क कि कुछ कॉर्पोरेट जो होती हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लिखवा लेती हैं, राइट। फिर मार्कशीट. सो इज इट लीगल? नो नो नो, इट इज नॉट। कैसी भी कंडीशंस हो, आप किसी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं रख सकते हो। ओके. बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका नहीं है ये बिजनेस का, और मैंने भी ये बहुत सारा सुना है कि a lot of people are doing this kinds of practices and which is not ethical at all। लीगल तो दूर की बात, एथिकल भी नहीं है। सो या, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। So in that case, नेवर। like the person with which was having that issue, like he said कि company ने बोला हुआ है कि they have their lawyer with them, who ओके। knows that thing कि अगर आप कुछ करोगे तो we will take an action. So in that scenarios, what a candidate can do, like he has submitted all the document, now he need it back, but company wants कि यार आपको तो notice period serve करना होगा, we won't give you the like sorry bond period, not notice period, हम आपको नहीं देंगे documents. सी, नोटिस पीरियड इज लीगल, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। बट नोटिस पीरियड कोई सर्व नहीं कर रहा है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसमें इट इज एडवाइजेबल कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के नहीं रख सकते हो, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन के गो टू द कोर्ट। स्पेसिफिकली लेबर कोर्ट्स में उन्हें बहुत अच्छे राइट्स हैं, आप लेबर कोर्ट में जाइए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, स्पीडी ट्रायल भी होता है, तो दैट पर्सन कैन मूव टूवर्ड्स द लेबर कोर्ट टू गेट देयर थिंग्स डन। Okay, so in meanwhile, let pick the question of Bhavya. You feel today's entrepreneurs are more aware of basics of law with specialization in their area, and can that basic knowledge can hamper the service your company offer? नो नो नो, सी, लीगल नॉलेज इतना एग्जॉस्टिव है कि अगर मैं, सी इट्स एन ओशियन, अगर मैं आईटी कंपनीज के साथ डील करती हूँ, पर्टिकुलर मी, सी वी आर अ लॉ फर्म, सो आई डील इनटू द अग्रीमेंट्स एंड विद द आईटी कंपनीज, देन आई विल बी लुकिंग केयर ऑफ दैट, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो दूसरे मुझे सारे लॉज आए। इट इज इम्प्रैक्टिकल कि आपको फैमिली लॉ भी आता हो, आईटी कंपनीज का भी आता हो, ई कॉमर्स का भी आता है, तो अलग अलग इतने ब्रांचेस हैं, तो मैं एडवोकेट से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो उसे सब कुछ आता हो। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आना नहीं आना
कोई डिफिकल्ट हम लोगों के लिए हैम्पर्स नहीं होता। और मैं तो एडवाइस, मुझे तो वर्क करना उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के साथ मजा आता है जिन्हें पहले से पता है बहुत सारी चीजें। सी, जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तभी मैं बोलती हूँ कि एक, जिस तरह हमें स्कूल्स में ना बेसिक्स ऑफ बिजनेस सिखाया जाता है, बेसिक लीगल भी सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी स्टार्टअप, इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस ना, यू शुड नो सबसे पहले कि विच टाइप ऑफ एंटिटी यू शुड एंटर इनटू। सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, कंपनी, और वॉट एवर इट इज, किसको चूज कर रहे हो, बिकॉज एवरी दिस बिजनेस हैव डिफरेंट रेगुलेशंस, टैक्स, कंप्लायंसेस। तो पहली चीजें तो आपको यही पता होनी चाहिए। लोगों को यही नहीं पता है, वो लोग बस हमें प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना है एंड दे गेट इनटू द प्राइवेट लिमिटेड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से बिजनेस में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहेगा या नहीं। तो एंटरप्रेन्योर्स को ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं, जो क्या एंटिटी रखें, क्या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लॉ कंप्लायंस है, वो तो मुझे लगता है और पता होना ही चाहिए। Yeah, और एंटरप्रेन्योर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लीगल चीजें देख लेगा। अगर वो देख लेगा तो आई गेस इससे अच्छा एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता है। exactly. तो दे बिलीव इन आउटसोर्सिंग। मतलब सी, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हमें बस ये बोलते हैं हम बिजनेस संभाल लेंगे, आप लीगल देख लो। हमें Exactly. सब पता है, बस आप संभाल लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उधर फोकस कर पाए। Right, exactly. तो Even for this point, I want to add one point कि होता क्या, जैसे Stripe पेमेंट गेटवे है, इन द पेमेंट गेटवे अगर आप जो, जैसे कि हम कहीं से कुछ पेटीएम से कुछ खरीदते हैं, अगेन एक पेमेंट गेटवे ओपन होता है, राइट? सो पेमेंट गेटवेज को इनेबल करने के लिए देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन स्ट्राइप कि आप प्रॉपर्टरशिप है तो हम देंगे नहीं आपको एक्सेस। किसी बंदे ने एग्जैक्टली। पूरा बना दिया और एट द एंड ऑफ द डे उसको ये पता चले कि वो प्रॉपर्टर है और उसको नहीं मिलेगा, दिस इज अ वेरी सेटबैक टू फॉर हिम, कि उसको जाके पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन नया करवाना है एंड देन उसको अपडेट कराना है। सो दैट या हैपेंस विद मेनी पीपल इन इंडिया। आई थिंक मेरे सामने अगर 7 से 8 एग्जांपल्स हैं जिनका स्टार्टअप्स, मुझे नहीं, अब मैं क्लाइंट से आई कांट आस्क डायरेक्टली कि आपकी कंपनी कौन सी है। व्हेन आई गेट टू नो कि आप प्रॉपर्टीशिप में हो, पेमेंट गेटवे लगा रहे थे, इट वाज डिसअप्रूव्ड। ट्रू। So this is where like small, this is just I think as you said ocean है पूरा, we can't say कि सब एग्जैक्टली। पता है। So many small things are there. Again, the second question is like from like Priya, while planning new business, how to check if our idea is already in the market? सी, आइडिया इज वेरी डिफरेंट। एंड सी, आइडिया तो क्या होता है, ज्यादातर आइडियाज ऐसे हैं कि हम सॉफ्टवेयर बना बना कर आईटी कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर करती है, राइट? कोई यूनिक आइडिया हो तो उसको चेक करने के लिए अगर हम देखें तो आईपीआर में हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी क्लासेस में रजिस्टर्ड है कि नहीं। इट इज इजीली यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ट्रेडमार्क ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और ये पेटेंट इसके लिए पहले से तो नहीं किसी ने ले रखा, या किसी ने कॉपीराइट अपने सॉफ्टवेयर का करवा तो नहीं रखा है। सो दिस आर द वेज यू कैन इजीली चेक इन द मार्केट। Okay. Harshit says, which documents are necessarily be authorized in a court while establishing a new business? सी, आई कैन गेट द क्वेश्चन। मतलब क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है कोर्ट में? सी, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट्स। आप Right. बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सी, तो वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहां प्रॉपर एक लिस्ट है, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, एमओए। यू नीड टू हैव प्रॉपर ऑडिटर्स की लिस्ट और प्रॉपर कंप्लायंसेस हैं, कितने आप ऑथराइज कैपिटल रखेंगे, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्या नाम रखोगे, और ये सारी चीजें हैं। तो वो एमसीए के वेबसाइट पे आपको करनी होती है। तो आई गेस अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आंसर करूँ तो एओए है, एमओए है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें हैं। Second question शायद पढ़ के समझ आया। I'm going in corporate sector next year. So what are the rights of candidate that he should exercise while is engaging in the jobs? अच्छा, एम्प्लॉयज की साइड से अगर मैं राइट्स बताऊं, ये पूरा वेबिनार अभी हमने एम्प्लॉयर फोकस अगर किया हो, तो ना एम्प्लॉय के लिए लॉ एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज लेबर लॉज जो है ना वो पूरे फोकस्ड हैं एम्प्लॉयज के पास, राइट? सो एम्प्लॉयज को क्या ध्यान में लेना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करने के एक्साइटमेंट में आप कभी ऑफर लेटर नहीं पढ़ते हो, कभी एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट नहीं पढ़ते हो, बस आप साइन करके अरे मुझे जॉब मिल रही है
you join that particular business. फिर बाद में जब उसमें लिखा होता है कि यू हैव टू सर्व 6 month ऑफ नोटिस पीरियड, तब आप हमें बोलते हो कि आप बचाइए। तो जब कुछ लिखा हुआ है तो आप एटलीस्ट, ज्यादा हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट ऑफर लेटर और ये डॉक्यूमेंट्स ना बहुत इजी होते हैं। तो जस्ट बी अवेयर, रीड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है। ये ऑफर लेटर एम्प्लॉयमेंट के अलावा यू नीड टू चेक कि कंपनी में कंपनी पॉलिसीज क्या है। कंपनी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत एग्जॉस्टिव, जिसमें एक छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि लीव पॉलिसी, और जैसे कि हम बात करें हमारे ट्रैवल अलाउंसेस, पीएफ, ग्रेचुइटी, ये चीजें मेंशन्ड होती है। तो आप एक बार जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं वो चेक करें। और आजकल आप कंपनी का डेटा भी, सी इज अ पब्लिक डेटा ना, तो यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा एंड चेक वेदर द कंपनी इज ऑथेंटिक है कि नहीं, इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी और नॉट, इट इज प्रॉपर लीगल एंटिटी और नॉट। तो ये चेक कर लेंगे तो आई गेस एम्प्लॉइज को इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। Right. Don't sign without reading is the key of all 14 registration. hours. Yeah, right. In that, one more question is there. Which startup needs most of the legal documentations? See, every startup I'll suggest. Depend कि अब जैसे for example अगर e-commerce business है तो it is most important to have a proper website, terms and condition, privacy policy, return policy, refund policy. These are all the things that are important for e-commerce business. IT company है तो वहां पर software developers के साथ agreements important हो जाता है, IPR assignment agreements, वही MSA, SLA, ये important हो जाता है। तो इंडस्ट्री वाइज देयर आर लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स, जैसे कि हर कंपनीज के लिए वी हैव फाइंड इट आउट कि ये 10 अग्रीमेंट्स हैं, ये तो होना ही चाहिए। तो उस आप स्ट्रीम पे पहले फोकस करो कि क्या है, और उस स्ट्रीम के बाद में यू डिसाइड कि कौन कौन से अग्रीमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ अग्रीमेंट्स कैन बी ड्राफ्टेड। सो वी ब्रिंग दैट 100 into 10 कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Right, right. For the payment gateway, you said very right. For the e-commerce example which you gave, terms and condition, privacy policy, and the refunds. These are actually a very basic documents. जब आप submit करते हो site for like approval from the bank and payment gateway, तो कई बार वो website reject होके आ जाती है क्योंकि हमारी website के राइट। 3 pages होते ही नहीं है. And this is according to law. So means like thanks for sharing this. I think this again a very important point which you Yeah. have shared. And not only e-commerce, I'll suggest कि every company जिसकी website अगर है ना, तो they should have a terms and condition, privacy policy, cookie policy, this kinds of things. And even आप जब Google पे app अपलोड मतलब स्टार्ट करते हो ना आपकी ऐप, देन ऑल्सो गूगल भी बोलता है कि यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, एंड इफ यू डोंट हैव तो वो रिजेक्ट कर देता है आपके ऐप को। Okay. So now coming to the last thing, like for the things you have shared everything, like the agreement importance, very beautifully you have explained like how we can deal with all those things. Now we want to know that like in summary, like if a person is starting a company and like what Ghazal would recommend that like this is the way you can start your company and take care of these basics legal part, and where your organization can also help them in like they can connect with you, they can understand like all the process with you. So just in a summary, if you can explain it up. Yeah, see, one thing we have started is over LinkedIn we share रोज हम लोग एक एक मतलब रोज तो क्या, अभी ट्राई कि हम कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए लीगल एडवाइस रोज अपडेट करें, ताकि एक छोटा सा नॉलेज पर्सपेक्टिव हो, तो यू कैन रीड दोस काइंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल एडवाइजरीज। फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी स्टार्टअप है, आप सोच रहे हो कि यू वांट टू डू बिजनेस, देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज you have to decide what business entity you want to enter into. Sole proprietorship, private limited company, partnership, and LLP, one person companies, because they have different legal requirements, compliances, regulations, and everything. So this is the most crucial, because इसी पर आगे पूरा आपका business depend करेगा. For example, अगर हमने उसको बात करी कि payment gateway की, but similarly investors also focus on the same thing. If investors prefer private limited company over all other entities, so because
जो कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स व्हाई दे चूज दैट पर्टिकुलर कंपनीज ओवर अदर एंटिटी बिजनेस. सेकंड थिंग, इफ अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है आपकी बिजनेस, देन इट्स ओके. बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, तो यू माइट बी हैविंग एनी को-फाउंडर और एनी अदर डायरेक्टर्स. सो हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारे रिलेटिव्स या friends ही होते हैं. So we think it's okay, we are good friends and we'll resolve the matters and it's okay. And we don't have any dispute, so why we need to have a proper founders agreement? So we always focus, okay, it is very, very, very crucial to have a founders agreement, right? Proper roles, responsibilities, profit sharings, exit clauses, what happen if they have disagreements. So when we have an agreement now, you bring the partners on the same page, and trust me, it resolves a lot of your disputes. Third thing you need to focus is on labor laws, right? कि क्या wages minimum देने ही होंगे employees को, क्या maternity leaves रखना है कि नहीं, posh policy और bonus क्या होंगे, ये सारी चीजें लेबर लॉज में यू हैव टू बी कंप्लायंट ऑफ द लेबर लॉज, वरना बहुत पेनल्टी लगती है कंपनी बिजनेसेस पे. सी, आई हैव सीन के कंपनीज में पॉश पॉलिसी, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी नहीं थी, एंड पेनल्टी अप टू 50,000 हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज. सो वो बहुत है इंपॉर्टेंट लेबर लॉज का कंप्लायंट. फोर्थ इज, आई गेस, intellectual property rights, right? Trademark, copyright, patent, your logo, your designs, you need to have a proper uh, intellectual property rights registered. And I guess if I have to sum up is like, if you see, if you started a startup, you might be in future or the present time, you might be focusing on the like investment kind of things, right? So you have to make your company investment ready from the day one. हमने जब इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वी देन मूव टू द लॉयर्स, और इवन वी डोंट मूव टू द लॉयर्स एंड वी जस्ट वांट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टर से एनडीए साइन करिए. इन्वेस्टर्स ऑलवेज शेयर्स, अगर आपने देखा हो तो एक टर्म शीट शेयर करते हैं, तो यू नीड टू रिव्यू दैट टर्म शीट, एंड इट इज वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड. एंड उसमें ये तक लिखा होता है कि 50% ऑफ योर ओनरशिप विल बी डायल्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स, एंड यू नेवर रीड इट. It has happened with one of my Mm. friend only, कि he thought, अरे it's okay, investment तो मिल रहा है, but he diluted his all shares. Oh. क्या investment ना. तो फिफ्थ थिंग इज इम्पोर्टेंट, यू गेट योर सेल्फ रिव्यूड. आपके डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी बार होता है कि हम इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे हैं या चीजें ऐसी हैं, तो एटलीस्ट गेट योर डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड विद समवन हु अंडरस्टैंड लीगल, राइट? तो लीगल ऑडिट कंडक्ट करने लगे हैं आजकल लॉ फर्म्स, राइट? वी के वो चेक करते हैं, अच्छा कंप्लाइंटेड हो, रेगुलेशंस रूल सारे फॉलो किए कि नहीं. तो दे मेक यू इन्वेस्टमेंट रेडी, कि जब इन्वेस्टर आएगा तो वो देखेगा, अरे ये तो ऑलरेडी कंप्लायंस है, हमें कोई चेकअप इनका नहीं करना है, दे आर ऑलरेडी रेडी एंड दे अप्रूव योर इन्वेस्टमेंट. Mm. तो दिस 5 थिंग, आई थिंक दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये लगता है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट ट्रस्ट मी, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन Mm. कंपैरिजन टू फ्यूचर लिटिगेशन. Yeah, totally agree with all the points which you have shared. And this is very high recommended for everyone who is starting a business. And I would definitely recommend the Gazelle. She's doing amazing job. As you said Thank on you. LinkedIn, I used to like check the post, and all information is very useful which you are sharing. Yesterday, I think 2 days back, you shared something of maybe Ratan Tata on some WhatsApp or something where, Yeah, yeah. and like I shared with my friends as well, and that, but we were not aware that he was the first person who got that death. And that number is so unique. मतलब 8 digits होने चाहिए डायरेक्टर डिन के, तो ही हैड 0000001. तो इट वाज वेरी यूनिक, और बहुत अट्रैक्टिव चीजें होती है ऐसी, तो इंटरेस्टिंग होती है, पता भी होना चाहिए. तो मजा आता है बिजनेस करने में भी. Right. Can we take two more questions if you have time? या श्योर. Okay, so one question is from Shriyanshi. Is there any agreement for trading business regarding payments from customer or companies? Yeah,
ट्रेडिंग बिजनेस इज लाइक समवेयर रिलेटेड टू ई कॉमर्स ओनली, तो उनके साथ हमें टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है, जिसे हम क्लाइंट अग्रीमेंट या कस्टमर अग्रीमेंट के नाम से भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की पूरे डिटेल्स रखेंगे, उनकी प्राइसिंग रखेंगे, उनका रिटर्न, उनका रिफंड, उनका कैंसिलेशन, और बाकी लीगल पॉइंटर्स जो मैंने सर्विस एग्रीमेंट के शेयर किए थे, वो सारे लीगल की ज्यूरिसडिक्शन हो, सॉलिसिटेशन और ये सारी, वो सारी चीजों को मिलाकर एक अग्रीमेंट जरूर बन सकता है, और उसी को हम कस्टमर अग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं। तो Right. इट इज मस्ट, एंड ये होता ही है बिजनेसेस में। One more question from Yutika is there. What can be the mistakes made by startup entrepreneurs leading to decrease in their finance side of it? How can we raise the finance for the startup? या रेजिंग फाइनेंस इज लाइक इन्वेस्टमेंट। सो Hmm. वही बात आ जाती है कि हमें मिस्टेक्स क्या होती है कि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स, आई हैव रीड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट ऑफ 200 पेजेस। Hmm. What? Yeah, it is 200 pages investment agreement. So उसमें इतना डिटेल होती है कि if you'll read, you will be ready with कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करें। और हम बात करें फिनेंसेस की, तो हम वही बात करते हैं कि जब हम फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो है टर्म शीट, जो इनिशियली वो हमसे शेयर करता है कि हाँ, एक अगर हमारी चीजें पॉजिटिव वे में मूव करेगी, हम आपका पूरा चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट शेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होता है। तो या ये चीजें हैं। रेस रेस फंडिंग रेस करने के लिए तो देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स और पिचिंग डेस्क और ये सब हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, वो एक पूरा ही अलग साइड हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो मैं डॉक्यूमेंट वे में आपको बता सकती हूँ कि हाँ, टर्म शीट रिव्यू करिए, चेक करिए, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट रिव्यू करिए, और साथ ही साथ उस इन्वेस्टर का चेक भी आप करिए। आप कभी नहीं देखते हैं कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो whether he has rights or whether he has that strength to invest in your business or not, तो ये चीजें आप चेक कर सकते हो। Right. अभी इसी क्वेश्चन से I would love to ask one more question from my side. Like what happen generally जो young entrepreneurs हैं, what they do is कि वो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि बार बार प्राइवेट लिमिटेड में हम मीटिंग्स में जाएंगे और अलग अलग खर्चे आ जाएंगे, बट लेटर ऑन यस यू एज यू सेड कि जो इन्वेस्टर है वो तो प्राइवेट लिमिटेड देखेगा, उसको तो बॉस इक्विटी चाहिए अपनी, तो वो अपनी करेक्ट। इक्विटी के हिसाब से वहां पे जाएगा। और पार्टनरशिप वाला बंदा तो अपने लेके बैठा है डॉक्यूमेंट, 50 तेरे 50 मेरे ट्रू। परसेंटेज में। सो व्हाट दे कैन डू, जब उन्हें लगा कि यार अब हमसे फंड्स रेज करने का वक्त आ गया है, नाउ वी नीड अ लीगल एडवाइजर, हम फंस गए हैं, अब हमें बिना फंड्स के बिजनेस आगे चलेगा नहीं, एंड दे वांट टू मूव इट टू प्राइवेट लिमिटेड। सो डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनी लॉ वेयर वी कैन इजीली या या कोई कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हम तो बहुत सी बार, जब आप सी क्या होता है, आप रेडी, कंफ्यूजन होता है जब हम कि हम प्राइवेट लिमिटेड करें क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो समटाइम्स हमें जब लगता है कि आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम पार्टनरशिप में ही जाते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लॉ वी हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट एलएलपी या हमारी पार्टनरशिप इनटू कंपनी, तो इट इज इजीली हम अपनी बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट। इनिशियली आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप रख लो, फिर लगे आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, तो आप फिर उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट? So again, it was a very great session, I would say. Lots of knowledge. थैंक मेरे यू। को तो time ही नहीं पता चला कि it's like very engaging one, and like we run out of the time. But the thing which you were sharing, that was like again I would say, like you said, it is an ocean कि जितना जाएंगे इतना ही हम चीजें करेंगे. One करेक्ट। message from Priya also, nice session. So it's good to know that थैंक यू सो everyone have मच। enjoyed it, and या like I would recommend everyone to connect with Gazelle on the LinkedIn. She has या already shared the link या uh, and her number. You guys can save her, and like you can connect with her. And it's good to know या that like people are sending messages, like they are like the session. It's very good to know. या And थैंक यू। be safe. इवन आई एंजॉयड कॉन्वर्सेशन, काफी ऐसा था, टाइम देखा ही नहीं, बस बातें चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, सो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, it's very important also because अगर मैं एक अपना experience share करूँ 2018 में when I started the first like startup,
तब no one came to me like कि यार ये legal points रखने चाहिए. I did the same mistake of proprietorship जो मैं आज example दे रहा हूँ मेरे friends का, ये मेरे साथ भी हो चुका था. Right, तो right. 2018 में मैंने ये mistake करी. I quickly launch a website and then मुझे एक message आया from that website कि आप eligible नहीं है because you should be in like partnership or you could be in a private limited. तो Right. सेम हैपन विद सो मेनी फ्रेंड्स. तो मैं अब सबसे यही क्वेश्चन एक बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ. स्टिल ऐसी चीजें हो जाती हैं क्लाइंट्स के एंड से. Correct, correct, correct. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लाइक स्टार्टअप्स के साथ पेमेंट्स नहीं आई हैं या एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज विच यू हैव शेयर्ड कि दोनों पॉइंट्स को हम कैसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मींस चेक कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's like a doctor, I would say. Lawyer is also a doctor. That's my thing. Actually, And because they should know everything about you so that like they can keep you safe every day. true. Okay. So thanks for your time. Thanks for sharing your knowledge. Thanks. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for coming. Thanks. Okay. Bye bye. You can reach out to me over LinkedIn or I have Thank shared. you. Yeah, thank you. I have shared the details as well, so you can freely reach out to me. Okay. Okay. Thanks. Okay. I Thank you. heard